Hello students and my dear friends. Today we will talk about the term looping. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लूपिंग एक ऐसा टर्म है जो सबके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। स्टूडेंट्स यही सोचते रह जाते हैं कि लूपिंग होती क्या चीज़ है, कैसे लूपिंग के लॉजिक्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे लूपिंग के बारे में और बहुत ही आसान तरीके से लूपिंग को सीखने की कोशिश करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़, व्हाट इज लूपिंग। हम लूपिंग किस चीज़ को कहते हैं, क्या चीज़ होती है लूपिंग, किसे हम लूपिंग बोलते हैं। तो सिंपल सी थिंग, लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स एट वन गो। कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स एक बार में एग्जीक्यूट करने को हम लूपिंग कहते हैं। जनरली क्या होता है, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लूपिंग की बात करते हैं तो लूपिंग हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ होती है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि लूपिंग को वर्कआउट कैसे करना है, लॉजिक कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है लूपिंग पे। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे लूपिंग इन पाइथन। जिन लोगों ने पहले सी या C++ पढ़ रखी है वो पाइथन की लूपिंग में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं उसके सिंटैक्स को लेके। एक बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लॉजिक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम होता है, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। लेकिन एक चीज़ और होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। पाइथन में लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो दो लूप्स के थ्रू परफॉर्म होता है, यानी कि फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप, ये दो लूप्स हम यूज़ करते हैं पाइथन में, लेकिन इन दोनों का ही वर्कआउट दो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म होता है। और लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है। C++ में जब आप वर्कआउट करते हैं तो फॉर लूप और वाइल लूप काफ़ी हद तक सिमिलर तरीके से वर्कआउट करते हैं, लेकिन पाइथन में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वर्कआउट करते हैं। और लैंग्वेजेस में अगर हम लूपिंग की बात करते हैं तो लूप्स में हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं जनरली: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन, ये 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। सिमिलरली पाइथन में भी होती हैं, लेकिन फॉर लूप में और वाइल लूप में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वाइल लूप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन, लेकिन फॉर लूप इसको फॉलो नहीं करता। फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है, यानी कि जो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है हमारा पाइथन में, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर लूप हमारा वर्कआउट करता है फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज पे। पाइथन में फॉर लूप हमारा वर्कआउट करेगा फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज पे। वो फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज जो हम सीक्वेंसेस के थ्रू देंगे, राइट। या तो हम प्रीडिफाइंड सीक्वेंस यूज करेंगे, अदरवाइज वी कैन यूज फिक्स्ड कांस्टेंट सीक्वेंस इन अ पाइथन, राइट। कौन कौन सी पाइथन में सीक्वेंसेस होती हैं हमारे पास? लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरीज एंड स्ट्रिंग्स। लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरीज एंड स्ट्रिंग्स, ये 4 हमारे पास सीक्वेंसेस हैं जिन सीक्वेंसेस को हम लूप में डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फॉर लूप में अगर हम इन सीक्वेंसेस को यूज कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट वर्कआउट करना है। नो इनिशियलाइजेशन, नो कंडीशन एंड नो अपडेशन। फॉर लूप ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा, ऑटोमेटिकली वर्कआउट करेगा। वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। दैट मीन्स कि वी कैन directly traverse the sequence using for loop in a Python. But while using while loop use करते में हमें इन तीनों चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। तो वेरिएबल which helps to iterate the loop, the variable which helps to iterate the loops is called काउंटर वेरिएबल। तो वो काउंटर वेरिएबल पहले हमारा इनिशियलाइज होगा वाइल लूप में, कि लूप यूज होने से पहले उसको हम इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम उसको कंडीशन में यूज करेंगे और उसके बाद हम उसको अपडेट करेंगे विद इन अ लूप बॉडी, राइट। तो फॉर लूप इज अ सीक्वेंस बेस्ड लूप एंड वाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप विच इज टोटली बेस्ड ऑन कंडीशन, राइट। हम लोग जब लूपिंग यूज करते हैं तो पाइथन में भी
स्टूडेंट्स आप जितने भी हैं, आप लोग जनरली फॉर लूप यूज़ करते हैं, वाइल लूप को आप लोग यूज़ नहीं करते, वाइल लूप का यूटिलाइजेशन आप लोग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इन दोनों का यूटिलाइजेशन सीखेंगे कि कैसे इन दोनों को हमें यूटिलाइज करना है। तो लेट्स गो टू द सिस्टम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लूपिंग। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज फॉर लूप। हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप से क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान है। आप लोग बहुत आसानी से फॉर लूप को वर्कआउट कर लेते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फॉर लूप का कि फॉर लूप कैसे काम करता है, क्या काम करता है, राइट। तो जनरली हम लोग जब फॉर लूप यूज़ करते हैं, हमारे लिए सबसे आसान होता है फॉर लूप को यूज़ करना। फॉर I is a variable, right, which is used to iterate the loop. So it is called a counter variable. This I is a counter variable for the loop. In is a part of for syntax, but actually in Python in is a operator, right? We'll talk about it. So in is a operator, and now here I'm using a tuple as a sequence. So suppose 1 2 3 4 5. These 5 values I have initialized in tuple. So this for loop works for each value defined in a tuple. Colon, this is the syntax of the for loop, and now under this for loop I said print and then the value of I. So now this will execute once for each value of this sequence, right? और values could be anything. यहाँ पे कुछ भी values हो सकती हैं. These are fixed constant values. अगर हम चाहें तो यूजर से एक्सेप्ट कर सकते हैं values. यूजर से एक्सेप्ट करके values अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो ये उस पर वर्कआउट करेगा, right? Now, so I'll run it. So this is the output. So if I change the values, suppose I said 11, 27, 3, 44, and 15, right? These are 5 values, and when I run this, so it will execute these 5 values, to print these 5 values, right? So this is the sequence. So we can use any sequence here. As I told you, I can use tuple, or I can use Control C, Control V, and now I can use list here as a value, right? Now, so in is an operator, so it will execute once for each value. It is called a traversal. It is called a traversal when we access each and every element of the list or a sequence or an array, whatever you want to say, right? So if we are accessing each and every element of the sequence, that is called traversal. So it will traverse each and every element of the sequence, right? Like this. Suppose if I use any string, suppose I am defining a variable, suppose s is equals to Nitin Mathur, right? Now here I am using for loop for I in s, for I in s, right? So it represents each and every character which is stored in variable s, right? S is a string type variable, and it will work out with the each and every character stored in variable s. Print I, and then run it like this, right? So I can print my name vertically. By default it prints the name in horizontal manner, but through loops I can print my name in vertical order. So we can perform any kind of manipulation using these individual characters or these individual values, right? Now individual character N, I, T, I, N, all these are individual characters, and my loop performs accessing of each and every element of the sequence, right? Now here one more thing we use with the for loop, that is the function called range function, right? What is the use of range function? What actually range function does? Range function actually generates values within a given range, right? For example, if I said for I in, I'm not mentioning any sequence here.
I am using range function to generate a sequence of values, right, within a given range. Range, and now starts from 1 till 8. So it will generate values and then print I. Now run, right? So it will generate values from 1 to 8, but it will not include the upper bound. This is my lower bound, 1 is my lower bound, and 8 is my upper bound. So it will range function generates values upper bound minus 1. That's why it generates values till 7. Instead of 8, it generates values till 7, right? And as you know, we can say, suppose I said 1 to 20, and third argument is for number of steps. So if I say 2, so it will generate all odd values up to 20. It will generate all odd values up to 20 here, right? Now next, from this loop, suppose I want to count number of vowels in this. So what can I do? Okay, I'll show you the use of in operator. I told you that in is a operator. It is not a perfect part of the for loop, but it is used with the for loop, but it can be used with other purposes, right? For example, if I in A, E, I, O, U, right? इंडिविजुअल कैरेक्टर. तो अगर I की वैल्यू यहां पे इस A, E, I, O, U में से कुछ भी होगी, then what will it do? It will calculate the value. For example, suppose A equals to 0, I said, and here I said A plus equals to 1. A plus equals to 1, right? So it will increase value of A by 1. अगर I की वैल्यू A, E, I, O, U में से कुछ होगी तो वो ऑटोमेटिकली A में by 1 इंक्रीज करेगा. इसको as it is print करा देते हैं. And out of the loop I said print value of A. That means total number of vowels. Or if you want some message, total vowels, run. Total vowels 4. 2 times I and A and U, right? 2 times I, A and U. So 4 vowels are there. So look at here, in is an operator and it is used in if condition. I have used this in operator in if condition, right? So it is not mandatory that in operator is only used with the for loop, right? It is not a part of the for loop. It is used with the for loop to access individual values of the sequence, right? Hope you understand the concept of for loop. Now, while loop. How to use while loop? I have told you the 3 concepts of looping, right? Initialization, condition, and updation, right? The while loop follows these three concepts of looping, right? Now, but these are related to counter variable. That means कि counter variable must be initialized before the loop. Suppose I want to print 1 to 10 counting, then what should I do? I am using A as a counter variable, so A equals to 1. This is the initialization of the counter variable. This is my initialization of the counter variable, A equals to 1. Now, while I need a condition, I want to execute loop 10 times. So I have to give the condition which should be true 10 times, right? Loop, this kind of a loop, यानी कि while loop will iterate till the given condition is true. Till the given condition is true. While
तो मुझे कंडीशन क्या देनी है, while a less than equals to 10, दैट मीन्स कि जब तक a की वैल्यू 10 या उससे छोटी है तब तक लूप मेरा वर्कआउट करेगा, राइट तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी लूप आइटरेट होता रहेगा, जैसे ही कंडीशन मेरी फॉल्स होगी लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा, राइट तो कोलन एंड देन एंटर, एंड नाउ आई सेड प्रिंट a, the value of a, right now I have used counter variable before the loop to initialize the values. I have used counter variable in a loop condition, and now the third stage, that is updation part of the counter variable, that is a plus equals to 1. This is updation part. कितना भी आपको अपडेट करना है, you can update, it's totally up to you. आपको by 1 increase करना है, by 2, by 5, by 10, और you want to divide, you want to multiply, whatever you want to do. It's totally up to you, up to your logic, up to your concept, what you want to do. Now, enter, and this is mandatory. Updation part is mandatory, conditional part is mandatory, and initialization part is mandatory, right? Okay, if I run it, so it will generate values from 1 to 10, right? If I forgot to update it, so it will not generate syntax error, but it will generate a logical error, right? Which kind of a logical error? The infinite loop. If I do not update a counter variable within a while loop, so it becomes infinite loop like this. Suppose अगर मैं इसको छोड़ दूं, यहाँ पे मैं इसको अपडेट नहीं करता और मैं इसको रन करता हूँ कोड को, तो now it becomes a infinite loop. So it will go and on and on and on and on and on and on. Right? Now stop it. Right? So updation part is mandatory. Otherwise, loop will be infinite. A plus equals to 1. So this is the basic difference between for loop and while loop. We do not use any kind of a condition in for loop, but we have to use a condition in while loop. That means that while loop is a conditional loop and for loop is a sequence based loop. It works with the sequence of values, right? अब वो values कुछ भी हो सकती हैं बेटा. It's totally up to you कि कौन सी values आप workout कर रहे हो, किस टाइप की values आपको use करनी है, आपको sequence use करनी है या आप range से values देना चाहते हो. It's totally up to you. But in while loop, it's a total condition based loop. It's a conditional loop. We have to give a condition, and while loop will iterate till the given condition is true. Till the given condition is true. जब तक condition true है तब तक मेरा while loop workout करेगा. जैसी condition false होगी loop मेरा terminate हो जाएगा. तो loop को terminate करने के लिए counter variable का update होना mandatory है, right? तो counter variable is initialized before the loop. Counter variable must be used within a loop condition and must be updated within a loop body, right? It's okay. Now, my dear students and my dear friends, होप आपको लूपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और पाइथन में फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा. तो अगर आपकी कोई भी और प्रॉब्लम है कंप्यूटर्स के किसी भी कॉन्सेप्ट में, प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर्स में, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू. तो इट्स ऑल फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट to like this video, comment on this video and share this video, and please subscribe my channel. So it's all for today. Stay healthy, stay safe. See you in the next video. Bye bye.